Hello everyone, welcome back to my channel Incredible Scholars. And in this video, I am just going to discuss with you the last topic of class 10 history chapter, Rise of Nationalism in Europe. और इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक है that is Nationalism and Imperialism. We know that the nationalism, it got its root in Europe. Obviously ये जो nationalism था इसकी main जो objective था what was that was creation of nation states. And nationalism जो है अगर हम देखें तो 1875 तक की अगर हम बात करें तो 1875 बल्कि 1871 हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है, तो तब तक हम देखते हैं कि हमारा नेशनलिज्म जो है वो हमारा क्लोजली एसोसिएटेड रहा किससे, डेमोक्रेसी के साथ, राइट. सो till 1875, rather I should say, nationalism was remained associated with democracy. क्योंकि इस समय जो भी हमारा नेशनल जो आइडियाज को स्प्रेड हो रहे थे, दे वर बेसिकली स्प्रेड बाय द नेशनलिस्ट्स. फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, what happened? ये जो एसोसिएशन था, एसोसिएशन बिटवीन लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म broke up. यानी कि इन दोनों का क्या हो गया, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का क्या हो गया, ब्रेकअप. बोथ वर गॉट नाउ सेपरेट, क्योंकि अब नेशन स्टेट्स बन चुके थे और ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे. ऑब्वियसली जो हमारे नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप, they had become intolerant to one another. Earlier they were cooperating with one another. पहले वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, लेकिन अब वो कोऑपरेशन उनमें खत्म हो चुका था and they had become increasingly intolerant. तो nationalist groups in Europe, in different parts of Europe, ठीक है, वो क्या हो गए थे, they had become increasingly intolerant. यानी कि वो आप एक दूसरे के लिए बिल्कुल इंटॉलरेंट थे. Earlier they were cooperating with one another, but now they had become intolerant and ready even to fight the wars. अब इसका फायदा किसने उठाया, इंपीरियलिस्ट पावर्स. भाई जो हमारी इंपीरियलिस्ट पावर्स थी, इंपीरियलिस्ट पावर्स in different countries manipulated
manipulated these nationalist feelings to assert their domination and to further their goals, यानी कि अपनी पावर्स को कंसोलिडेट करने के लिए, ठीक है, और अपनी डोमिनेशन को यूरोप में एस्टैब्लिश करने के लिए, डोमिनेशन इन यूरोप, ठीक है, हर एक कंट्री क्या चाहता था, अब यूरोप में अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करना चाहता था, क्योंकि अब एक चीज हमको ध्यान रखना है भाई, जर्मनी अलग नेशन है, इट वाज नॉट अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स, ठीक है, इटली हमारा एक सेपरेट नेशन है, इट वाज नॉट अ पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रीजन्स, ठीक है, स्विट्जरलैंड इट वाज नॉट अ पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रीजन्स, फ्रांस इट वाज नॉट अ पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रीजन्स, similarly Great Britain it was not a patchwork of different nationalist groups, or you can say the ethnic groups living in the British Isles. So obviously यहाँ पर हर एक कंट्री जो है, हर एक नेशन जो है, हर एक नेशन की जो भी रूलर्स थे, they were wanted, वो क्या चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी वो अपने कंट्रोल में करें, जिससे कि यूरोप के अंदर उनका डोमिनेशन एस्टैब्लिश हो सके। नाउ द रीजन ऑफ मोस्ट सीरियस टेंशन आफ्टर 1871 इन यूरोप, it was the region that is what we call Balkan region, right? So the area of serious tensions after 1871 was the region called the Balkan region. अब ये पूरा जो रीजन था, बाल्कन रीजन, अगर आप इसको देखें तो यू कैन फाइंड दिस रीजन वाज कंसिस्टेड ऑफ ह्यूज, अ वाइड वैरायटी, ठीक है, यानी कि ये जो रीजन था हमारा बाल्कन रीजन, यहां पर आपको क्या देखने को मिलता था, वाइड एथनिक डाइवर्सिटीज, राइट, यहां पर आपको बहुत ज्यादा एथनिक डाइवर्सिटीज, डिफरेंट रीजन्स, आपको ज्योग्राफिकल और साथ ही साथ आपको एथनिक डाइवर्सिटीज भी देखने को मिलती है। That means the people they were belong to diverse ethnic groups, और यहां के जो रहने वाले जो लोग थे, the people were called Slavs. इनको क्या बोला जाता था, Slavs बोला जाता था, right? So this region, Balkan region, this was consisted of great ethnic and geographical diversities, and the people who were living over here, they were called Slavs. अब इस रीजन में अगर आप देखो तो बाल्कन रीजन में हमारे आज के अगर मॉडर्न स्टेट्स के हिसाब से देखें तो दिस कंसिस्टेड ऑफ रोमानिया, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, रोमानिया, देन आपका बल्गारिया, राइट, देन आपका सर्बिया,
देन आपका ग्रीस, देन आपका मैसिडोनिया, देन आपका बोस्निया, हर्जेगोविना, right? Then this consisted of Montenegro, right? So these were some of the major countries that we could find in this region today also. ठीक है? तो ये सारे हमारे जो कंट्रीज थे, इन कंट्रीज में हमारा क्या था, बहुत सारा एथनिक डाइवर्सिटीज यानी कि एथनिक वेरिएशंस भी हैं और ज्योग्राफिकल वेरिएशंस, राइट? और ये जो हमारा पूरा रीजन था, दिस वाज अंडर द कंट्रोल सिंस द 15th century. Since 15th century, this region was under the control of the Ottoman Empire. ये पूरा जो हमारा रीजन था, ये हमारा ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी की शुरुआत में अगर आप देखोगे तो ये पूरा हमारा वो रीजन था जहां पर आपका रोमांटिक नेशनलिज्म का स्प्रेड, द स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, the spread of romantic nationalism in this region, as well as disintegration of the Ottoman Empire. Right? दो चीजें यहां पर, स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म और दूसरा हमारा ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन। ये दो फैक्टर्स ऐसे थे जिसने इस पूरे रीजन को अनस्टेबल कर दिया, हालांकि थ्रू आउट द 18th and 19th century अगर आप देखो तो जो हमारे ऑटोमन एम्पायर के रूलर्स थे, दे हैड ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन इन द रीजन through modernization as well as introducing some administrative reforms. लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक एक करके ये जो नेशनैलिटीज थी, जो स्लाविक नेशनैलिटीज थी, ये एक एक करके क्या होने लगे, इंडिपेंडेंट होने लगे, राइट? सो दिस वाज व्हाट हैपेंड थ्रूआउट द 19th century, the Ottoman Empire tried to consolidate its position in the region through modernization and internal reforms.
इंटरनल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है, इसके थ्रू उन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की, कंसोलिडेट करने की कोशिश की, बट दे वर नॉट सक्सीडेड। इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला, और एक एक करके जो उनके स्लाविक, जो इस रीजन की जो नेशनैलिटीज थी, दे बिगेन टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस, दे बिगेन टू break up from the Ottoman Empire, और वो अपने अपने इंडिपेंडेंस को असर्ट करते। बट इट्स यूरोपियन nationalities broke away and asserted their independence, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये जो हमारे जितने भी नेशनलिस्ट थे, these nationalists, they claimed for their independence and political rights on the basis of nationalities, अपने अपने नेशनैलिटी को उन्होंने बेस बनाया, एंड यूज्ड हिस्ट्री, और हिस्ट्री को उन्होंने यूज किया टू प्रूव दैट एक समय ऐसा था जब वो इंडिपेंडेंट थे, बट लेटर ऑन जो फॉरेन पावर्स थी उन्होंने उनको सब्जुगेट कर लिया और उनके ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। राइट, दीज nationalities used history to prove that they were once independent, but later the foreign powers subjugated them, अब ये जो हमारी नेशनलिटीज थी, ये किस तरह से अपने इस स्ट्रगल को देख रहे थे, यानी कि वो उनका जो अपना स्ट्रगल था उसको ये मानते थे कि दे वर ओनली स्ट्रगलिंग फॉर देयर लॉन्ग लॉस्ट फ्रीडम, जो फ्रीडम वो खो चुके हैं उस फ्रीडम को वापस हासिल करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, सो दे सॉ their struggle, they saw their struggle as for achieving back their long lost freedom. अब ये जो हमारे नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो हम कह रहे थे कि इंटॉलरेंट हो गए थे, तो उसका मेन रीजन क्या था? नाउ
अब ये बाल्कन रीजन के अंदर एक एक करके ये जो नेशनैलिटीज, जो स्लाविक नेशनैलिटीज जो इंडिपेंडेंट हो रही थी, दे वर जेलस ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे से क्या करती थी, बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते थे, जलन थी। एंड दैट वाज व्हाई उनमें से हर एक ये चाहता था कि उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, यानी कि दे वर ट्राइंग टू रीडिफाइनिंग देयर आइडेंटिटीज, ठीक है, बट एट द कॉस्ट ऑफ द अदर्स। तो अल्टीमेटली ये पूरा रीजन हमारा क्या बन गया, इट हैड बिकम वेरी एक्सप्लोसिव। सो दीज न्यूली independent nationalities were jealous of each other, jealous of each other and wanted to control more territory at the cost of the other। क्या करना रहे थे वो, दूसरे की कीमत पर दूसरे की टेरिटरी को वो अपने टेरिटरी में मिलाना चाह रहे थे। एंड दिस वाज द रीजन, ड्यू टू दिस द रीजन had become quite explosive। अब ऑलरेडी यहां पर क्या था, राइवलरीज हैं, जो हमारी न्यूली इंडिपेंडेंट जो नेशनैलिटीज थी, दे वर हैविंग द राइवलरीज, उनमें आपस में दुश्मनियां हो गई। अब वो एक दूसरे के दुश्मन थे, they were now not cooperating with one another, they were having now developed with enmities, rivalries among one another। और ये सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो गई when the big powers in Europe, जिसमें आपका ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, राइट, रशिया, they began interfering in the बाल्कन रीजन। क्योंकि यहां पर ये बड़ी बड़ी जो पावर्स थी, यूरोपियन पावर्स थी, दे वर ऑल्सो वांटेड टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। और हर एक जो है, ऑब्वियसली ये जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज थी, इन सब के बीच में एक तरह से होड़ लगी हुई थी। दे वर कॉम्पिटिंग अगेंस्ट वन अनदर कि वो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कर पाए। एंड दिस वाज द रीजन व्हाट हैपेंड, दैट द सिचुएशन became worse when big European powers, European powers began interfering in the Balkan region, to increase their influence, by eliminating the others,
eliminating the others. यानी कि आप कह सकते हो कि नेशनलिज्म जो है वो हमारा अब इंपीरियलिज्म के साथ कनेक्ट हो चुका था. What was the ultimate result of all this? This finally led to the First World War in 1940. इसने पूरे वर्ल्ड को एक वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल दिया. Right? So this was what about this whole topic, nationalism and imperialism. Hope that you will be able to understand the whole topic. Whatever your queries, whatever your doubts are, you can just write in the chat box. And if you have still not subscribed the channel, then please subscribe my channel, Incredible Scholars. Thank you.